Hello and welcome to Rev Sports. I'm Gargi Raut, and joining me today is Shubhayan Chakrabarti and Rohit Juglan. Soon, Shomik Chakrabarti and Debashish Sen will also join us to talk about how the Guwahati wicket is looking, how the pitch is looking, and obviously any other updates from Ground Zero. But before that, let's talk about Sitanshu Kotak because in that press conference, Sitanshu Kotak was very defensive about Gautam Gambhir, and like back in England, he did not hold back at all. When that whole pitch curator thing happened, when that altercation between Gautam Gambhir and pitch curator happened, even then, Kotak made sure to go out there and clear the air and defend Gautam Gambhir. Something similar has happened this time around. If I were to read what Sitanshu Kotak said, he said, see, as regards to the pitch for the last match, Gautam Gambhir took all the blame on himself. No one is saying that the batter did this or the bowler did that, or that we can do something different in batting. I believe even if you become over defensive on a turning track, you can still get caught because the bowler will start bowling consistently. Now, Shubhayan, if I'm going to start with you, Sitanshu Kotak, saying all of, I don't think, if I look back on the things that have happened, I don't think anyone was that critical of Gautam Gambhir except the social media trolls. But way too much attention on what is being said on social media. I don't think any of us said something similar to, that this. We all were of the opinion that it was a lack of application that resulted in that loss and not the wicket itself. Gargi, the people were critical of the Eden pitch, like former cricketers on social media, be it Irfan Pathan, Aaron Finch, Michael Vaughan, many others. They had tweeted about the Eden Gardens pitch, not about Gautam Gambhir. Yes, Gambhir is in the firing line because of another home test defeat, but people were questioning the Eden Gardens pitch, the curator, and since it was from the team management that they wanted a drier surface than what was being prepared at Eden Gardens. I think Gautam Gambhir took the bullet upon himself. He took the blame upon himself and protected Sujan Mukherjee because see when such things happen, when it was not a diabolical pitch in South Africa. I remember when India toured South Africa for the two test series, the Cape Town pitch was the smallest test match in terms of deliveries bowled. Uh, Rohit Sharma came in the press conference. I remember after drawing that test series 1-1, he came up in the press conference and the first word he said, you can go back and look at that press conference. The first word he said that if we start now, when South Africa tours, when Australia tours, when England tours India, we will prepare dust bowls and no one should say a word about our pitches, our home pitches. That's the first thing Rohit Sharma said after the end of that series. So the pitch curator had come up under the scanner, and since Eden Garden was hosting a test match after 6 years. Sujan Mukherjee, already a very popular figure among KKR fans. So fingers were being pointed on Sujan Mukherjee, and you never know. Nobody knows. He might have even lost his job. But Gambhir came up, took the bullet upon himself. He said, "No, I had asked for this exact thing," and from there on criticism diverted towards Gambhir. That why would you require such pitch? Many former cricketers on their respective platforms were questioning Gambhir's demands of asking for that pitch since Gambhir took that bullet upon himself. And as soon as Gambhir said those words that we wanted exactly that kind of pitch, criticism was inevitable. So now if Sitanshu Kotak is coming and defending Gautam Gambhir, then I think the ship has sailed a lot. It is not coming back from there. So criticism has happened. People will say Sitanshu Kotak is defending his head coach. He's trying to put a cover on put a lid on that entire issue, but that's not going to be the case. The more you talk about it, the more it will become trickier. So better to leave the things in past and focus on Guwahati test rather than focusing too much on what is being said on social media. Yes,
even Gambhir knows. As soon as they lost the match, even Gambhir, I am pretty sure he would knew that, there would be criticism. If you lose four tests out of six home tests, then criticism is inevitable. So there's no hiding from that. If someone, even when MS Dhoni was sacked from the test captaincy, it was very similar kind of results. That too away from home, not at home. You can't hide away from criticism. The best you can do is make correct calls, play on better pitches, and ask your players to take some responsibility out there. रोहित, काफी लोग इसको बहुत नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। जैसे शुभायन ने भी कहा कि ही वाज जस्ट डिफेंडिंग हिज हेड कोच सितांशु कोटक, एंड ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन थ्रू इन दिस मैनेजमेंट 2-3 years ago, we wouldn't even be getting an answer. This and I have noticed something with this Indian management is that they will not shy away from taking accountability. We have seen this multiple times in England as well. We have seen it multiple times in Delhi. Shubman Gill coming out there ahead of the Eden game and saying that, that enforcing that follow on was a mistake, or him saying in back in Edgbaston that I should have scored more runs when he was asked about lower order contributions. And then Gautam Gambhir as well. uh, कोई जरूरत नहीं थी उनको ईडन पिच क्यूरेटर को, शुजॉन मुखर्जी को डिफेंड करने की, बट उन्होंने आके कहा कि ये मुझे पिच चाहिए था, एंड आई डोंट थिंक एनीवन एक्सपेक्टेड द पिच टू ड्राई आउट द वे that it did. Even Sitanshu Kotak also said that we were expecting it to spin from day 3. Your thoughts? I think the first thing is that both of them are means when you talk about both the statement said by Gautam Gambhir on that very day, that whatever I have asked for, they have delivered it to me. So one thing is that, and what Sitanshu Kotak today said is completely what exactly Gautam wants to try on that very day. But I think it in means Sitanshu Kotak, one thing is very clear as far as Sutanshu's press conference is concerned, that there are people who are running an agenda. There are people who, not only Gautam Gambhir, but be it a Shubman Gill, be it a Jasprit Bumrah, be it a Rishabh Pant, all of them, are part of their, that agenda creators list, that today we're going to bash Shubman Gill, today we're going to bash Gautam Gambhir, today we're going to bash this particular individual. And sometimes, and there are not only trolls behind that, there are ex-cricketers also. And beat Jasprit Bumrah, beat Shubman Gill, beat Gautam Gambhir on that very day. When he said, you were there, Gagi, in that press conference, when he said about Krishnamachari Shrikant, he hasn't taken the name, but he said that, people in YouTube. And I asked Jasprit Bumrah a couple of times in England, once in Lords and then on the very first time in Leeds, that how do you see that? And he says that, he said on that, but on both the occasions, that, it's good for people, to run YouTube channels, to have views, to get some subscribers on my name. So one thing we have to say, that yes, there are agenda driven, ex-cricketers also nowadays. It's not only the trollers, it's the ex-cricketers also who are running an agenda. The second thing is what happened. Let me give you an example. Like we were there, we both were there, me and Shubhanda were there, and it was because Ashes is right now is the keyword and Perth Test is the keyword. We both of us remember that Mitch Stark came on the very first day of the press conference and he said that the wicket will be the same throughout the match. He said this on the very first day. It was a green wicket, Jasprit Bumrah picking up wickets on the very first day, Mitchell Stark on the very first day. It was a very bad show as far as batting is concerned for both the teams. And then what we saw on the other 2 days, it completely dried out. It was brown on the second day and it was, that roasted red on the very third day. And it got completely better for the batting. Yashasvi Jaiswal with a big 100, Virat Kohli with 100, KL Rahul with an 80. So sometimes what happens is that what curator is promising is, it never be like that, what curator is saying, he'll give you 100% like that only. We have to accept this, that it's a batting failure also. We have to accept this, that 124 or 123 runs is very much possible on that wicket. We have to accept this, that we are lacking playing against good spinners. This is not happening for the very first time. Be it a Steve O'Keefe, be it someone like a Mitch Santner. Mitch Santner is a top quality bowler, but someone like a Steve O'Keefe. Why I'm taking his name, because he was a newcomer.
So there were many names. If you talk about foreign teams coming to India, overseas players coming to India and delivering it here, I don't think it's now limited to pitch, that what kind of a wickets we are making. It's all about, do our batters have capabilities playing spin bowling? And the answer is no. We have to rectify that. We have to strengthen our game as far as playing spin is concerned, and we have to get better on that. Otherwise, you can make any kind of wicket. Tell me, when we lost, when we were on the verge of losing a test match in Bangladesh. I remember there was a critical partnership between KL Rahul and Kuldeep Yadav down the order, and Ashwin also, I think, played a handy knock with the bat. So that kind of wicket was not something where you can say, oh, it was a rank turner. That was a good wicket, but it's again the same thing, that we were struggling against a Mehndi Hasan Miraj. Then, and there were multiple occasions where we struggled against spin bowling. You remember the last time the Australian team, came here for the Border Gavaskar Trophy? It was about, the way we lost the Indore test, where Ashwin averages 12. We lost that test match because we can't play spin. And then we went back to a flatter deck in Ahmedabad, and then it was a draw. In Delhi, we were, there was a good knock from Jadeja, good contribution rather from Jadeja all the way around. That's why we won that test match. Otherwise, I think Nagpur we won. Nagpur we won quite convincingly, but Delhi, we were on the verge of losing the test match. But it was heroics of Jadeja. We won that game. Indore we lost, and Ahmedabad we dropped. So this is not the very first time when the spin and And the also pitch thing is Nagpur coming also together. Rohit Sharma's century came. Was it that game? Yes, yes. Nagpur was the Yeah. first test where Rohit Sharma scored that 100. Yes. So my point is, it's not only about the pitch. It's not only about, a curator making something for you. It's all about the right question at the right time. And I think the right question is, as per me, the right question is, do we have the batters who have technique? I'm not saying play spin in a rank turner. I'm saying that, can you play a good quality spin in a good wicket also? Shubhanda was there in the New Zealand series. Mumbai isn't a rank turner. Where we lost the game, it wasn't a rank turner. Even Pune, for that matter, I say that it wasn't a rank turner. And what about Bangalore? Bangalore was an overcast condition. It wasn't a rank turner, but we lost the game because we can't able to play spin. That's the only thing. Shubhain, I don't know if you've noticed, but I've been looking at Jasprit Bumrah's stories as well. And he's been post. You haven't? आपने देखा है रोहित? वो आजकल मैंने 2 बार तो नोटिस किया है अभी तक कि he has been posting some stories about criticism and all of the haters, ये सब ऐसे कुछ तो उन्होंने 2 बार तो स्टोरीज डाली है पिछले कुछ दिनों में. So I have seen that. So I think maybe this is a No, I conversation that is. remember. I remember the test match ended in Delhi after हाँ. Ahmedabad. Test match ended in Delhi, and the criticism was about that Jasprit Bumrah not able to pick the top order wickets. Tail end. Oh, okay, yeah. Tail ender लेके stat padding Yeah, करते yeah, हैं yeah. ये He कह was रहे थे. picking up tail ender wickets. And I just did a quick research. And if you see that research, Gargi, in that research, it's quite, you can easily understand that if you compare him with, the Wasim Akrams and the Glenn McGraths and the Joel Garners, everyone, I'm talking about from 70s, he's the guy who's having the best average as far as top order batters are concerned. His top means, इफ यू ब्रेक डाउन, अगर आप ब्रेक डाउन करोगे कि उसने ओपनर्स के विकेट कितनी बार लिए हैं, तो उसके करियर में उसने सबसे ज्यादा तो जिस बंदे का विकेट लिया है वो 4 नंबर पर खेलता है. एंड नंबर 4 पोजीशन इज द पोजीशन जो आपको भी पता है, हम सबको पता है, इज अ पोजीशन इन टेस्ट मैच जहां पर आप अपना बेस्ट बैटर खिलाते हो. एंड देन द सेकंड मोस्ट टाइम ही डिसमिस्ड द बैटर इज द ओपनर्स. ठीक है, जिसमें अगर आप इंग्लैंड सीरीज भी उठा करके देखोगे, हु ही वाज डिसमिसिंग जैक क्रॉली, ही वाज डिसमिसिंग बेन डकेट, ही वाज डिसमिसिंग बेन स्टोक्स, जो रूट लॉर्ड्स, अगर आपको टेस्ट याद हो, जो रूट, देन ही डिसमिस्ड हैरी ब्रूक. तो उसमें क्रिस वोक्स, एंड आई डोंट कंसीडर क्रिस वोक्स अ टेल एंडर. वी ऑल नो दैट ही हैज 10 प्लस फर्स्ट क्लास हंड्रेड्स. सो आई थिंक तो वो चीज पिछले कुछ समय में जसप्रीत बुमराह को लेकर के काफी इंक्रीज करी है. देन दैट मोहम्मद कैफ काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी वेयर ही सेड इन एशिया कप दैट जसप्रीत बुमराह अपने आप को सेव कर रहे हैं नीचे के ओवर्स डालकर. It's not Jasprit Bumrah who take the call, na, that where I want to bowl. Yes, he's a senior bowler. He's someone who can initiate the things as far as where he want to bowl. But if captain and coach is saying something to him, how can he say that no, मैं ना वो पहले बॉल से पहला ओवर मैं नहीं डालूंगा, मैं लास्ट के लिए बना हुआ हूँ. It's not like कि हम गली नुक्कड़ में खेलते हैं और हम बोलेंगे नहीं मेरे से ना डेथ में बॉलिंग नहीं होती तो आप मुझे ऊपर करा दो बॉलिंग. It doesn't go like that, na. So
I think in last few months there were multiple things. We all know that what happened in England. Why is he taking rest? Why is he taking rest? Means it's in front of you, and that's why we all were there. When I remember, I asked this question to Ajit Agarkar also, that what is your how you are seeing this, that Jasprit Bumrah asking for rest, and workload management thing. He said this very crucial thing that India comes first, but we know where we have to use and where we have to rest our major resources. So I think तो पिछले अगर आप 4-5 महीनों में देखोगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद से there was a lot of criticism as far as workload management. फिर विकेट नहीं ले रहा है, फिर नीचे के विकेट्स लेता है, ऊपर के नहीं लेता है. तो आई थिंक एंड जसप्रीत बुमराह के पास वो है उस तरह का एक विट जो होता है ना, एक विट आपको चाहिए होता है जवाब देने के लिए. एक वो विटीनेस चाहिए होती है, एक थोड़ा सा सटायर भी चाहिए होता है. लाइक उन्होंने एक बार स्टोरी डाली थी कि एक खाली स्टेडियम की स्टोरी डाली थी और एक भरा हुआ स्टेडियम था. तो खाली समय पे वो बता रहे थे कि 4 लोग बैठे हुए हैं. जब हमारा डाउन फेज होता है तो 4 लोग बैठते हैं, और जब हमारा गुड फेज होता है तो फिर पूरे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आकर शाउट करते हैं. तो वो बड़ा ही कंट्रास्ट उन्होंने दिखाया था बहुत अच्छे तरीके से. सो ही इज गुड एट दैट, जहां पर उनको क्रिटिसिज्म पे जवाब देना है. सो आई थिंक, और इस इंडियन टीम में अब लोग आपको दिख भी रहे हैं. मतलब शुभमन का भी मैंने देखा है कि शुभमन भी ऑस्ट्रेलिया में, मुझे याद है जब उनसे प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपके और रोहित को लेकर के बातें कहीं जा रही है, तो उन्होंने सीधे कह दिया, सोशल मीडिया पे तो चलता रहता है. सो पहले हम क्या सुनते थे गार्गी, वी हेयर दिस अ लॉट दैट वी डोंट लिसन टू द आउटसाइड नॉइज, मीडिया पे क्या चल रहा है हमको नहीं. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. नाउ यू सी क्रिकेटर्स, बिकॉज दे मतलब उनके पास खुद 15-15 मिलियन लोगों के सब्सक्राइबर हैं. सो व्हाई डू दे नीड कि कोई अखबार आके हमारे लिए कुछ अच्छा लिख दे या कुछ. दे हैव देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इतनी मल्टीपल मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, वो कुछ भी डाल देंगे. इवेंचुअली आपको और हमको वो लोगों को बताना ही पड़ेगा. सो आई थिंक आज के क्रिकेटर्स इस चीज में पीछे नहीं है, एंड दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट. कि जो है जहां है जैसा है, अगर उन्हें लगता है कि क्रॉस हो रहा है कुछ भी चीज, लाइक संजय मांजरेकर के लिए जडेजा को लगा कि क्रॉस हो रहा है, मैं बिट्स एंड पीसेस प्लेयर नहीं हूं, तो उन्होंने सीधे बोल दिया. तो ये आपको अब बहुत ज्यादा दिखेगा आगे आने वाले समय में भी, आई थिंक. Definitely, the young gen who is very connected to social media and what is being said. ऑन योर फेस, ऐसा नहीं है Yes, पीछे बात yes. करेंगे, आपके मुंह पे बोल देंगे कि भाई आप खराब हो और आप अच्छे हो. इट्स गुड, आई थिंक गुड. I think we all remember also Lords, Jasprit Bumrah ने कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा था, but याद नहीं आया I आपको know. तो अच्छा है. यहाँ पे comment है SS98 is saying speechless. The coach is safe, rest are thrown under the bus, not the era we wanted. Again, I think it is being very twisted. Whatever Sitanshu Kotak said is being twisted again on social media, which is this is the new age of social media. You're damned if you do, But you're how damned he if you can save the coach if the team doesn't play well? How can he save the हाँ, coach? क्या आप ये exactly. बोल सकते हो कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट पे घर पर बहुत अच्छे कोच है? नहीं कह सकते. क्या रिजल्ट उनके फेवर में है? नहीं कह सकते. तो कोच कैसे सेव हो गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ. मतलब क्या पता नहीं. सुतांशु कोटक, क्या वो कोई, मतलब क्या हम किसी एनार्की में रह रहे हैं और वहां पर सुतांशु कोटक एक बादशाह हैं और उन्होंने आकर बोल दिया कि गंभीर पर कोई सवाल नहीं उठाएगा तो गंभीर पर सवाल नहीं उठेंगे? नहीं बॉस, ऐसा नहीं होगा. आपको अगर ये पता है कि आपके पास ऐसे बैटर्स नहीं है जो इस तरह की कंडीशंस में नहीं खेल सकते, तो आस्किंग फॉर अ विकेट जो तीसरे चौथे दिन में टर्न करेगा, उस मतलब इंग्लैंड में अभी आपके बॉलर्स ने आपको दिखा दिया यार कि आप अच्छी विकेटों पे भी मैच जीत सकते हो. देन व्हाई यू हैव टू आस्क फॉर अ रैंक टर्नर काइंड ऑफ थिंग. खेलो ना, तलवार से तलवार लड़ेगी. कगिसो रबाडा उनके पास है, तो हमारे पास भी तो जसप्रीत बुमराह और रबाडा तो था भी नहीं पिछले टेस्ट मैच में. तो उनके तो पास अगर अच्छे yeah. बॉलर्स हैं तो हमारे पास भी तो अच्छे बॉलर्स हैं यार. हम कौन सी कोई अब 80s के दौर के बॉलर है कि एकनाथ सोलकर दौड़कर आ रहा है और वही गेंदबाजी कर रहा है, और यू हैव ओनली कपिल देव. तो वो वाला फेज नहीं है भाई. तो और कोच सेव नहीं होता यार. कोच कैसे सेव हो जाएगा? जैसे शुभानंदा ने अभी बोला, 7 में से 6 टेस्ट मैचेस या 4 टेस्ट मैचेस, अगर आप 4 टेस्ट मैचेस सपोज आप जीते हो, 4 में आप 2 जीत रहे हो बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. हम सबको पता है वो रैंकिंग में कहाँ रहते हैं. तो आप कैसे बच जाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि गौतम गंभीर को आप डिफेंड कर सकते हो इस समय पर. डिफेंड इस बात को लेकर के कर सकते हो कि उन्होंने जो विकेट मांगा, और जो बात इस समय पर की जा रही है कि लोग इंडिविजुअल उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उस बात पर बवाल हो रहा है कि भाई अगर आपके बल्लेबाज खेलेंगे ही नहीं अच्छा तो कोच क्या करेगा? कोच थोड़ी जाकर बैटिंग करेगा. बात इस चीज को लेकर है, सिर्फ इतनी है. मेरे को ईडन में पहले दिन किसी क्यूरेटर टीम के तरफ से किसी ने बताया था कि पहला मैंने फोन किया था कि कैसा खेलने वाला है, तो उन्होंने बोला था
फोन नहीं किया था एक्चुअली, वो नीचे मिले थे मेरे को, तो उन्होंने बोला था पहला 1 घंटा देख लेता हूँ, पहला 1 घंटा में मुझे भी नहीं पता ये पिच कैसे बिहेव करने वाली है। तो अगर आप मतलब वही बात है कि अगर सपोज गार्गी एक आर्टिकल लिख रही है या एक वीडियो बना रही है, मैं उसको मिडवे में 10 मिनट का वीडियो है, मैं 5 मिनट में उसको रोक के बोलता हूँ कि अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर दो, रैंडम तुम्हें ये चीज बोलना है अब अगले 5 मिनट, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगी, उसको भी नहीं पता होगा कि अगले 5 मिनट वो क्या बोलेगी। तो वही हुआ है, जब जब मैच डे -3 में ये लोग आधा घंटा पिच देखने गए, ब्रिस्बेन से उतरे थे 9 तारीख ये लोग, उसके बाद 10 तारीख को ये लोग एक बार विजिट करने गए थे, 11, 12, 13 को प्रैक्टिस हुई थी, तो जिस दिन वो लोग गए तो उस दिन उन्होंने अपनी डिमांड रख दी थी कि हमें थोड़ा सा टर्नर चाहिए, ये ज्यादा ही लाइवली है, घास भी है इसमें तो थोड़ा हो, तो उसके बाद से पानी बंद कर दिया गया था। तो थोड़ा सा मॉइस्चर देना था, तो सुबह की ओस जो गिरती है, सुबह 6 बजे कवर सट जाते थे, तो वहां पिच का मॉइस्चर सिर्फ ओस पड़ा था उसमें 4 दिन, और कुछ नहीं था, ना पानी पड़ा ना कुछ पड़ा, तो इवन क्यूरेटर्स को भी नहीं मालूम था कि वहां पे क्या बिहेव करेगा, कितने बजे टूटेगा, कब टूटेगा, धूप निकली हुई है, हेवी रोलर लाइट रोलर का मसला है, तो इवन उनको भी नहीं पता था कि ये पिच क्या बिहेव करने वाली है। सो मतलब पिच पे अगर आप ऐसे पिच दोगे तो साइमन हार्मर 1000 फर्स्ट क्लास विकेट लेने वाला बॉलर उनके पास भी है, केशव महाराज 400 मैचेस खेले हुए इसमें, वो बॉलर्स भी उनके पास है, वो लोग भी खेलने आए हुए। एडन मार्करम आएगा, 3 ओवर डालेगा, 1 विकेट लेके चला जाएगा, आप उनके स्पिनर्स को गेम में ला रहे हो, और मतलब अब पता नहीं मुझे 6 लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे, 7 लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे, इतने सारे लेफ्टीज अगर आप एक 1000 फर्स्ट क्लास विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर को अगर आप दोगे तो डिसएडवांटेज तो रहेगा ही। तो rather than focusing on पिच या विकेट कैसा खेलेगा, आई थिंक टीम बैलेंस या टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेटर करने पे फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल, हम सब वही कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट पे जो ट्रस्ट है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए इस वक्त। लेकिन ये फोटो है आज सुबह की, देवाशीष ने भेजी थी हमें पहुंचते ही, मैच डे -2 गुवाहाटी विकेट। शुभायन, योर फर्स्ट थॉट्स ऑफ दिस विकेट? दिख रहा है ग्रीन शीन है एक, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ड्राई पैचेस है, उतना भी नहीं, लेकिन व्हाट आर योर थॉट्स? डू यू थिंक दिस विल बी अ मोर बैलेंस्ड विकेट, क्योंकि रेड सॉइल पिच है, थोड़ा मुंबई लाइक बिहेव करेगी? व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं, मुंबई लाइक बिहेव तो नहीं करेगी, गुवाहाटी में जितने मैचेस हुए थोड़ा सा स्लोइश ही रहता है, रेड सॉइल है, बट अभी भी टू अर्ली, 2 दिन जाने तो देखते हैं ये पिच में कितनी घास रहती है। मैच डे -1 में मैं इसका आई गिव माई वर्डिक्ट ऑन दैट, कि मैच डे -1 की पिच की विकेट जब आएगी तब तब विल डिसाइड कि कैसा है, बट गुवाहाटी का विकेट थोड़ा सा जनरली स्पिनर्स को हेल्प करता ही करता है, वो वहां का टेंडेंसी है, जितना जितना रणजी ट्रॉफी मैचेस वगैरह वहां पे हुए हैं, तो थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प करता है ट्रेडिशनली। सो देखते हैं अभी व्हाट व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड हियर। वहाँ के क्यूरेटर कुछ भट्टाचार्य कुछ है वहाँ के क्यूरेटर, और दोनों आशीष भौमिक और तापस चैटर्जी जो बीसीसीआई के क्यूरेटर्स है, वो लोग भी आई थिंक ईडन के सेकेंड डे में वो लोग पहुंच गए थे वहां पे। सो अब लेट्स सी हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड। गुवाहाटी में पहला मैच है, तो आई एम प्रिटी श्योर दे विल आल्सो पुश की 5 दिन एटलीस्ट मैच चले, 4 दिन एटलीस्ट मैच चले, तो उतनी बदतर हालत नहीं होगी जो ईडन में हमें देखने को मिला था। रोहित, क्या लगता है? आई थिंक वही एक तो ना प्रेशर आ गया होगा अब इस चीज़ का ना, जो पिच वाली कंट्रोवर्सी हुई है, इसका प्रेशर आ गया होगा। लाइक पता है क्या, पहला टेस्ट मैच होस्ट करने का फायदा यही है कि आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है ना। पहला टेस्ट मैच यू गो फॉर आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से भी जाते हो। अब जैसा ईडन का विकेट ने बिहेव किया है, एंड देन उसके बाद आप देखोगे कि इंडियन टीम हार गई है, और उसके बाद आपने देखा कि इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है बिटवीन क्यूरेटर एंड कोच, जो मतलब ठीक है, क्यूरेटर और कोच तो उनका आपसी रिश्ता कैसा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि सोशल मीडिया और मीडिया में इस चीज को लेकर के बड़ा हुआ कि यार मे बी टीम मैनेजमेंट क्या खुश थी पूरी तरीके से, जिस तरीके से विकेट जल्दी टर्न होना शुरू हो गया। उन्होंने अगर तीसरे चौथे दिन मांगा था तो विकेट तो पहले दिन से घूमना शुरू कर गया था। सो द थिंग इज लाइक दैट, तो एक तो प्रेशर आ गया होगा। और जितना अभी जैसा हम देख भी पा रहे हैं, शुभानंदा शायद इसलिए भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने फोन से ये फोटो नहीं खींची है, वरना वो बता देते आपको कि ये विकेट कैसा होगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि वो फिर 100x जूम इन कर देते उस पर। बट द मैंने थिंग भी इज ले कि लिया जितना, बाय द वे फोन। हाँ, मैंने भी ले लिया है। आप क्या नहीं ले सकती हैं, आप अब तो भाई चारों क्या तरफ से बोलेंगे। है।
चारों तरफ से हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, हाँ, हाँ, हम बिल्कुल। ब्रॉडकास्ट कर एक सकते तरफ हैं। से मामा को बैठाएँगे, एक तरफ से शुभायन, एक तरफ से मैं। देखिए, मामा तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो देवाशीष दा को जानता हूँ। हाँ, हाँ, देवाशीष। बाकी 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 जो ग्रीन ग्रास की जो हल्की सी कवरिंग लग रही है ना, मुझे मुझे यही लग रहा है कि शायद इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि विकेट को ज्यादा टूटने ना दिया जाए, क्योंकि देखो अर्ली ऑन नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा मतलब रहता है इस चीज को लेकर के कि एक तो मॉइस्चर आपको अच्छा खासा मिलता ही मिलता है। द सेकंड थिंग इज, अब धूप तो उतनी आपको ऑलरेडी नहीं मिल रही होगी वहां पे इतना ज्यादा, मतलब जो हम कहते हैं कि 30+ मेरे हिसाब से नहीं होगा, जो भी चल रहा होगा 20s में ही चल रहा होगा। बट हाँ, धूप काफी अच्छी होगी, बट उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो ग्रीन ग्रास अभी छोड़ रखा है एट द टॉप, वो इसीलिए छोड़ रखा है कि आप एकदम ब्रेक डाउन मत होने दो विकेट को, क्योंकि फिर वही स्थिति होगी। और शायद कल हमें जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है हमारे वो बता पाए, शौमिक दा या देवाशीष दा, कि भाई वहाँ पे पानी कितना दिया जा रहा है, क्या पानी देने से यहाँ पर भी मना कर दिया गया है। बट लग नहीं रहा है मुझे ऐसा कि पानी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रेड सॉइल है तो रेड सॉइल में वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, उसमें वो चीज़ रहती है ऑलमोस्ट। तो देन आई थिंक, एंड हैवी रोलर भी लग रहा है, हैवी रोलर चल रहा है, तो आप बनाना चाह रहे हो उसको बिल्कुल ठोस, बैटिंग अच्छी हो पहले 2 दिन, जैसे हम अमूमन तौर पर इंडियन विकेट्स कहते ही हैं, पहले 2 दिन बैटिंग के लिए अच्छा, तीसरे दिन से थोड़ा बॉल फंसना शुरू होगा, और चौथे दिन और पांचवें दिन में टर्न करना शुरू करेगा। तो वो टिपिकल सब कॉन्टिनेंट विकेट की एक तस्वीर नजर आ रही है। बाकी देखते हैं, जैसा कहा पहला टेस्ट मैच है, तो हुँ। विशिंग ऑल द क्यूरेटर्स ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं इसमें इस टेस्ट मैच से कोई सुजोन मुखर्जी 2.0 निकल के आते हैं या नहीं। देखो, जैसा गार्गी, हमको ये पता ही है कि शुभानंदा नहीं हाँ, जा रहे हैं, तो इंडिया के लिए अच्छा ही होगा। वाह! शुभायन शॉट्स फायर्ड लेफ्ट एंड राइट। अब शायद जैसे सितांशु कोटक डिफेंस के लिए आए थे ना, वैसे बोरिया सर को आना पड़ेगा आपके डिफेंस के लिए। आप भी अपना एक सतांशु कोटक रखिए भाई। T20 सीरीज जीत के तो आए अभी ऑस्ट्रेलिया से, एशिया भाई कप है भी तो जीत यार, गया। उसमें तो देखो, उसमें 2 मैच ही नहीं हुए ना, 2 मैच अगर अब उसमें क्या हो कर जाते सकते हैं, दो तीन में से भी दो ही जीते हमने। ओके, क्या। चलो आखिरी आखिरी 5 मिनट ऑन द शो। हम्म। शुभायन, ऋषभ पंत टेस्ट एज कैप्टन, ही इज लेफ्ट a lot to be desired, as obviously he's not the permanent captain, but at the same time some blunders that we did see whenever he takes charge. But what are your thoughts? Still very early to judge him as a captain, and this is going to be one very very important test match for him. See, he's not a captain, so he's not going to be judged for a very long time in captain's parameters. Even when he was leading LSG last season in IPL, there were plenty of moves. When we used to do our lives, we used to discuss, "Arey, Bishnoi was bowling a better spell. Why did you change him?" Or Digvesh Rathi was bowling a good spell. Why did you change him? So there were plenty of things during LSG or last IPL also where Rishabh Pant had lot to be. He could have been a better captain. My only complaint with Rishabh Pant was that he gave away too many singles to the that Corbin Bosch wala partnership. I think that is where they Temba Bavuma and Corbin Bosch added 30-35 runs overnight, scored 40 odd runs in overall partnership. That became a very crucial knock. And even not bowling Jasprit Bumrah with the given not giving him the first spell on that day. I think that pushed us back in that particular test. Whatever the condition is, whatever the pitch is, whatever the ball condition is, if you are starting your day, it has to be Jasprit Bumrah with the ball. Rand Turner, Green Top, it doesn't matter. It has to be your best bowler on that particular at the start of the day. Plus, Eden Gardens, you had early moisture every day, so why not use them as well? So Rishabh Pant, I don't think he will be judged a lot with the captain's parameter, uh, but I think he could have been a lot better. So yeah, but not he's not the only guy to be blamed for the Eden debacle. There are, I think, from 1 to 11, everyone from the coaching staff. I think everyone has to take this defeat collectively and not just put fingers on one player. But yeah, I think these two guys, I think Shubman, Rishabh, they are very early into their careers. They will learn. Like Shubman came for the pre-match press conference and said, "Yes,
we could have batted and not given the follow on to the West Indies team. That's something I learned from that West Indies test match. So these guys are learning. These guys are learning, and it will take some time for them to become good captains in international cricket. It is still very early in their respective careers. Yep. Rohit, thoughts on Rishabh Pant as captain? He's not the regular captain and he's still very, very young into the role, but at the same time, very important match. नहीं, बट मैं इसको थोड़े दूसरे नजरिए से देखता हूँ. आई थिंक ही इज नॉट योर ही इज नॉट योर रेगुलर कैप्टन, बट ही इज समवन हु इज ऑलवेज अप विद द एडवाइसेस. If you see the Leeds test, he was with the advice of changing the bowling ends. We can easily, because the most important thing is we can easily hear him whenever he was saying something to Shubman Gill, and there were multiple 1 2 3 2, like 1 2 3 2 1 kind of conversations. Like first Rishabh is saying something to a bowler, and then they were having a meet up with Shubman Gill, and then they are discussing the plans. So I think yes, the Timba Bahuma thing that Shubhanda said, that there were a lot of singles down to that long on area, and could be easily put that long, in spite of a long on, they can easily go on with a mid on kind of position. But there might be certain things which were going at that point of time on Rishabh Pant's head, and we can easily give it to him. That there were multiple moments in that England series where he was with the with the loudest suggestion. You can catch that in Stump Mike, that when to change the ends, when to bring in another bowler. So yes, as we rightly said on that particular series, that Shubman Gill was it was a master class from him, that to introduce Nitish Kumar Reddy in Lords early, and he picked up two crucial wickets, back to back two crucial wickets. Or to change ends of Jasprit Bumrah in that second particular innings, where in the morning session he picked up, I think, Ben Stokes, Joe Root, and Harry Brook. But in spite of all of this, there were some interesting calls from Rishabh Pant also, be it the DRS calls also. I'm going for the DRS calls also, where he was right there, that we have to take it or we don't have to take it. So I think the social media is too harsh on Rishabh Pant. I think he's learning it very quickly, be it in the IPL also. I remember the captain of the captain of Delhi Capitals, Rishabh Pant, and then the captain of LSG. Yes, there were some calls, as Shubhanda said, that Bishnoi बहुत अच्छा करा रहा है, दिग्विजय शाटी का कभी एक ओवर पूरा ना होने देना, कभी बिश्नोई के 3 ओवर पे उनको रोक देना. There were some calls when we criticized him, but I think he learned a lot in last 2 to 3 years. If you see where he started in Delhi Capitals to where he is in LSG, and then now to be the captain in the Test cricket very first time. I think, well, I think I'm hopeful, I'm optimistic as far as Rishabh Pant, the captain, is concerned, with all his strategies, the DRS things, and be it the planning part. I'm very hopeful. All right, on that note, we'll take your leave. Shomik and Devashish could not join us, but they couldn't join us for a very good reason. We have a very, very special long interview coming up. So stay tuned to Rev Sports. We'll be back with more, of course. Updates from Ground Zero in Guwahati will continue. Shomik and Devashish are the ones covering this match. No Shubha, no Gargi, no Rohit. It's Shomik and Devashish. So stay tuned. We'll be back very soon. Thank you so much.